So friends, चलो हम आज स्टार्ट करिबा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड आज टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट. सो फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट रे हमें डिस्कशन करिबा व्हाट इज एनवायरमेंट and what are the different related topic and subject that interconnected with the environmental management. So friends, environment जो word a word French word environner रू ही आसीची and ये गोटे biological and non-biological surrounding and organisms and thus includes in environment. आमे जानिछो आमर environment is the sum total of water, air and land, interrelationship among themselves and also with the human beings and other living organisms and properties. तो इटा होची by default definition in 1986 but environment पाई की हमें को disciplines को देखिबा that is life science including botany, zoology, microbiology, genetics, biochemistry and biotechnology. These are helps to understand the biotic components and their interactions. Same the physical and chemical structure of the biotic components and energy transfer and flow are understood with the help of basic concept of physics, chemistry, geology, atmospheric science, oceanography, geography, mathematics, statistics and computer science. But subject like education, economics, sociology, mass communications provides the inputs for dealing with the socio-economy aspect associated with the various development activities. तो ये सब सब्जेक्ट मानक नहीं कि ना बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बना है a synthesis with environmental engineering, civil engineering, hydraulics and chemical engineering from the basic for various technologies dealing with the control of environment pollution, waste treatment and development of cleaner technology that are important for protections of the environment. So हम पाखे different engineering technologies अच्छी जो मनकर help रे हमें केमिति environmental को protect करी हबो से सब ऊपर भी जानि परिबा. नेक्स्ट अछि स्कोप. Scope of environmental study is a broad based and it encompasses a large number of areas and aspects broadly listed. Okay, हमें ए listed items पूरा देखिबा जोगरा की broadly हमें focus करिबा environmental management. First अछि natural resources. नेचुरल रिसोर्स माने प्राकृतिक जो रिसोर्स हमें यूज करूचे तो सेमानकर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ताहा हमें डिस्कशन करिबा. इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी ऊपर डिस्कशन करिबा. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऊपर डिस्कशन करिबा. आगु सोशल इश्यूज इन रिलेशंस टू डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट ऊपर डिस्कशन करिबा. ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट ऊपर हमें आगु जाई फर्दर डिस्कशन करिबा. सो ए जो नेचुरल रिसोर्स टू ह्यूमन पॉपुलेशन these are the basic aspects of environmental studies which have a direct relevance to every section of the society. Environmental studies can be highly specialized also which may concentrate on more technical aspects like environmental science, environmental engineering, environmental management, environmental biotechnology. तो environmental science को जदि हमें देखिबा तो यारो बहुत branches of engineering रे हमें environmental management पाई परिबा. So these are the environmental science branches. Environmental belongs to all and is thus important for all.
ठीक अच्छे कहीं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आम ए सब ऊपर डिस्कशन करबा जेकोसी भी एज हो जहाँ भी हो आम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऊपर स्टडी कर परिबा सो damage to the forest in a hilly region will have far-reaching effect not only on the hill but also on the plains. ଆମେ ଯେ କହିବାନି ଯେ କେବଳ environmental pollution hill area ରେ ହଉଛି ନାହିଁ plain area ରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି. Environmental studies is very important since it deals with the most uh, mundane issues like safe and clean drinking water, hygienic living conditions, clean and fresh air, fertile land, health, food, and development that is sustainable. आमे basically focus करिया different sustainability उपरे. So इस वो उपरे आमे discussion आगु करिया. समती environmental law, business administration, and environmental engineering are emerging as a new career opportunity for environmental protection and management. हम जब देखिबा एनवायरमेंटल रो मैनेजमेंट ऊपर बहुत भल कैरियर भी बनै हे परिबो एंड बहुत जगह जॉब फैसिलिटीज भी अवेलेबल अछि with the pollution control laws becoming more stringent industries are finding it difficulty to dispose of the produced waste in order to avoid expensive litigation various companies are now trying to adopt green technologies जो जिनसटा कहली जे आमे आगु बहुत जॉब रिक्वायरमेंट ऊपर हे पारि एवं वर्तमान भी अछि कहीं कि ना बहुत कंपनीज दे रिक्वायर्ड देयर ग्रीन टेक्नोलॉजी सो ग्रीन टेक्नोलॉजी हमें आसीबो कोठू जदि हमें एनवायरमेंटल को प्रॉपर्ली स्टडी करिबा सो market for pollution control technology is huge in the world cleaning of the waste produced in another potential market. It is estimated to be more than 100 billion per year for all American business. German and Japan, having more stringent laws for many years, have gained more experience in reducing effluents. Still, there is a 200 billions market for cleaning of the former East German alone. So, आमी जदि कहबा ओवरऑली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रे भी जॉब रो रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज अछि कहीं ना आ मधरे भी इन्वेस्टमेंट रे बहुत प्रकार रे चलछि फीचर्स फीचर्स इस टॉपिक रो कोन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रे कोन रहउछि फीचर्स इट डील्स विथ ए वर्ल्ड इफ अफेक्टेड बाय ह्यूमन माने पृथ्वी रे जते लोक अछंती समस्ते किछि ना किछि जगह रे एको अफेक्ट होचंती तो आ ऊपर हमें पढिले बहुत किछि जानि परिबो इट सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगु तो डिस्कशन करिबा डिटेल्स रे बट माने आमे कोनोसी रिसोर्स को केमती मैक्सिमम यूज करि परिबा मैक्सिमम समय पर्यंत यूज करि परिबा तो ता होची सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल एनर्जी तो आमे घरे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करूचे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होची जो जो रिसोर्स रो आमे से सब को केमती मैक्सिमम समय पर्यंत यूज कर परिबा दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ता ऊपर आमे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट डिस्कशन करिवा इट डिमांड्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच तो आमे केवल गोटे वे रे न जाई पारियो बट एठी हमको बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल अछि जहा थ्रू रे आमे ए सब्जेक्ट को देखि परिबा इट हैज टू इंटीग्रेट डिफरेंट डेवलपमेंट व्यू पॉइंट्स हमें विभिन्न व्यू पॉइंट्स रो भी सहायता नहीं परिबा ए सब्जेक्ट ऊपर दैट मींस हमको गोटे ब्रॉडली कांसेप्ट प्रोवाइड करे ए सब्जेक्ट The time scale involves extends the short term and concern range from local to global. तो हमें locally भी जहां अनुभव करूचे that is same realization in global so it भी गोटे बड़ features it seeks to integrate natural and social science policy making and planning आ ऊपर हमें natural social science रो काम करि परिबा policy making and planning काम करि परिबा तो ए सब दिनस आपरे हमें करि परिबा our scheme for the progress of mankind as well as maintain the quality of life at least at a minimum level the entire environment both physical and cultural should be properly managed तो ये subject पढ़ला पर हम physical and culturally केमती properly manage करिबा ता हमें discussion करिबा
Due to environmental degradation, our society is suffering in many ways. The main reason of such environmental deteriorations is its mismanagement, right? So mismanagement होउछ बोली हम इस सब्जेक्ट को अधिक मात्रा रे पढ़िबा. तो आम डिस्कशन करिछे डेफिनेशंस आ बेसी जीवानी. सो नेक्स्ट देखिबा environmental management is an approach which integrate ecology, policy making, planning and social development. Our main objectives kon rohuchi environmental management padhibar. So these are the to prevent and solve environmental problems. किसी भी problems asile environment upare ame taku solve kari pariba. To establish limits हमें प्रति जिनसर यूज रो लिमिट रखी परिबा. To develop research institutions and monitoring system. To warn threats and identity opportunities. To suggest measures for resource conservation. तो आमे ए सब काम जेमति resource conservation ऊपर जाय परिबा. जेमति कि प्रथम कथा हला हमर ऑब्जेक्टिव हला आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन प्रॉब्लम. प्रथमे प्रॉब्लम कोन आसुची से सब को आइडेंटिफाई करिबा. तापरे डिटरमाइन्स ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान नबा. माने प्रॉब्लम ए अछि तो आमे को टाइप रो एक्शन नबा ता ऊपर डिस्कशन करिबा. नेक्स्ट अछि इंप्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस इवैल्यूएशन. तापरे अछि तामे केमिति भलो भाबरे इंप्लीमेंट करिबा. कौन प्रोग्रेस इवैल्यूएशन पाई ऑनगोइंग मैनेजमेंट कंटिन्यू केमती चलिबो. मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट मैनेजमेंट में मैनेजमेंट चलला बेले ताको प्रॉपर्ली केमती मॉनिटर करिबा एंड ताको प्रॉपर्ली केमती एडजस्ट करिबा. एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड प्लान हमें फ्यूचर को केमती प्रॉपर्ली मैनेज करिबा तार भी प्लानिंग प्रॉपर्ली हमें एठी करिबा. तो ए बॉक्स ता रिपीटेशन होउची ता माने मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट मैनेजमेंट अगेन जाउछ ऑनगोइंग मैनेजमेंट पुणी अगेन जाउची मॉनिटरिंग पुणी ऑनगोइंग. तो एमती भावरे ये दीटा चलिबो. एंड आमे डायरेक्ट भी देखिबाटे आसी परिबा इंप्लीमेंटेशन रो डायरेक्ट कैच करि परिबा कोठी कि ना मॉनिटरिंग. तो मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट मैनेजमेंट और फ्यूचर ए दीटा दिन से इंपोर्टेंट काहे कि ना आमे डायरेक्टली आसी कि एठी टच करि पारुचे. त माने ए साइकिल प्रोसेस टारे मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपोर्टेंट. एटा तो हमें देखिले गोटे जनरल स्कीम ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. तो एटा कोन हुई ना टू डेवलप ए स्ट्रेटजी फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पई की यूज करा जाय. टू सजेस्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू आइडेंटिफाई न्यू टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तापरे हमें देखिबा एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स. एनवायरनमेंट कोन अछि एंड आर कंपोनेंट्स पूरा कोन अछि. So environment encompasses virtually everything that surrounds an organisms in holistic ecological approach. आप environment कौन कहले हमर चतुर्पार्श्व रे थिबा इकोलॉजिकल सिस्टम को ही हमें environment कहबा. किंतु आउट ऑफ ऑल 9 planets जहां पर planet सब अछि. So earth is like a planet. Life on earth experience different types of surroundings. These surroundings may be living or non-living. Each living organism constantly interact with its surroundings and adapt to two. These surroundings are our environment, the physical environment which consists of soil, air, water, sunlight among others, provides a favorable conditions for the existence and growth of different life forms. Living beings constitutes the biological environments. तो हमें जदि कहिबा लिविंग बीइंग सब हमर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स से माने सब एग्जिस्ट करछन. So both the physical and the biological environment closely interact with each other from a stable self-propellant system. Everything that influences an organism and its living process from outside is collectively known as environment. The living components of the environment is known as the biotic components and the non-living components as the abiotic components. तो ये जो एनवायरनमेंट टर्म ता बना है जे दीटा वर्ड को मिसै कि गोटा अछि बायोटिक कंपोनेंट एंड अदर वन इज एबायोटिक. तो जतिक जीवित जीव अछंती लिविंग बीइंग्स अछंती तो से माने बायोटिक्स भीतर को आसीबे. जो माने नॉन लिविंग बीइंग्स अछंती से माने अबायोटिक्स भीतर को आसीबे. No organism can live without interacting with the environment. Animals depends on green planets for food and oxygen, where as plants depends on animals for pollinations of flowers
and dispersal of seeds as food. Therefore, for the survival of human civilization, the protection of its environment is very important for this some fundamental principles. So, एठी से कहूची एक कथा जे दीटा जिनस जो माने लिविंग्स एनिमल्स अछंती सेमन तो ऑब्वियसली फूड एंड ऑक्सीजन भी दरकार करिवे बट जो माने प्लांट्स अछंती सेमन सेही सब टाइप रो एनिमल्स जो माने सेमति की प्रजापति हे गेले तो एई भलिया बीज हे गेले तो एमान थ्रू से माने कोन करंती ना फूल एंड सीड्स क्रिएट करंती फ्रूट क्रिएट करंती एंड सेही फ्रूट को एनिमल्स माने खांती तो ये गोटे कंप्लीट सिस्टम थाए तो से सिस्टम को बैलेंस रखिबा ही एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रा काम सो एटी फंडामेंटल प्रिंसिपल कोन ना मेंटेन ऑफ बायोडायवर्सिटी एटा को मेंटेन रखिबा मेंटेनेंस ऑफ ऑल गैसियस एंड मटेरियल साइकिल्स एंड interdependence of living organism among themselves and with biotic environment maintenance of ecological order and natural balance which depends on the food chain relationships sustainability productivity and biotic interactions. So igratila components then as your segment of the environment segment of the environment I discussion kariba natural environment. So our environment can be broadly classified into natural and man-made environment. तो हमारा segment of environment रे दीटा जिनस हम डिस्कशन करिबा गोटा अछि natural environment आ गोटा अछि man-made environment. So natural environment कोन ना each living organism has a specific surroundings with which it interact and to which it is adapted. This surroundings is its natural environment. The natural environment can be broadly classified into two categories. The non-living are abiotic components, जेमति कि कौन ना climate factors such as solar radiation, temperature, wind, water, current and rainfall. एमाने हेले abiotics and एमाने हेले natural environment and एमाने हेले non-living things. फिजिकल फैक्टर्स रे केमति आसे लाइट एयर प्रेशर माने भी से कैटेगरी रे जाउ छथि तो एक सेगमेंट रे माने हेले नेचुरल एनवायरनमेंट सेमति क्लिनिकल फैक्टर्स जेमति कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी सैलिनिटी अवेलेबिलिटी माने जाउ छथि लिविंग और बायोटिक फैक्टर रे माइक्रोबीज प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने जाउ छथि आगोटा अछि कंपोनेंट्स सेगमेंट्स रे मैन-मेड एनवायरनमेंट तो मैन-मेड एनवायरनमेंट कोन कहला विथ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स हैव बिगन टू अल्टर द एनवायरनमेंट टू सूट देयर रिक्वायरमेंट दिस हैज लीड टू द evolutions of a man-made environment hence the environment which earlier comprised just air land and water now all includes crop field urban air, industrial space, vehicles, power plants, telecommunication and much more. Man-made environment रे कोन हैला ना जहा मनुष्य बनेला that is man-made environment. जेमति कि crop field है गेला urban areas है गेला industrial space है गेला तो गोटे तो by natural environment exist करूची natural environment रा गोटेला man-made रे ए सब जिंस मनुष्य बनैछि. The basic needs of human beings are shelter followed by potable water sanitation so ये सब जिंस man-made environment रे असला आउटा man-made environment भितरे आउटा छै social environment इथरे कोन हुए ना human beings are social animals मनुष्य गोटे social जीव this is why the socio-cultural environment plays an important role in their lives. The social environment is formed by the network of social instructions which includes political, religious and economical institutions. Family in one of the basic institution of the social environment. तो ए सब को यदि हमें कहबा तो ए सब कहा अंडर आछुंती ना सोशल एनवायरनमेंट भितर आछुंती देन एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ यदि कहबा एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी रो एनवायरनमेंट विषय रे देन एयर और एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट पाइबा वाटर और हाइड्रोस्फीयर एनवायरनमेंट पाइबा लैंड और लिथोस्फीयर एनवायरनमेंट पाइबा तो प्रथम है एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट कोठी ना अप टू exceeding up to 2000 feet and above माने ग्राउंड फ्लोर रो 2000 फुट एंड above जति के रहिला तो आमे ताको कहबा कोन ना एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट तो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट भितरे पुनी पांचटा रीजन अछि ट्रोपोस्फियर अछि स्ट्रेटोस्फियर अछि
then mesosphere अच्छी and a thermosphere अच्छी and a exosphere अच्छी तो एमाने different layer ए atmosphere रो different layer and ए different layer रो different range अच्छी different temperature अच्छी different properties अच्छी तो ओजोन layer जो माने जो जानती हो तो low ozone layer mesosphere and high ozone layers अच्छी stratosphere तो ये सब layer मानकरे different कौन एयर फॉर्म अच्छी बट एयर डिफरेंट गैसेस अच्छंती तो एमान को नेकी बना हिची एटमॉस्फेयर तापरे नेक्स्ट अच्छी हम डिस्कशन में होया हाइड्रोस्फीयर तो हाइड्रोस्फीयर होजी कोन ना ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज namely the ocean, seas, rivers, lakes, ponds, pores, ice cap, stream, glaciers, groundwater and water vapors ଯେତିକ ପାଣି rivers ହେଇଗଲା water sources ରେ ଆଉ ଯେତିକ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯୋଉ source of layer ହବ that is hydrosphere ତ hydrosphere ରେ ଆମର ପାଣି ରହିବ hydrosphere is an important part of the earth surface about 70% of the earth's surface is covered with water मनुष्य शरीर में एते पानी सेति परिमाण पानी मध्ये exist करूची earth surface रे then lithosphere the lithosphere is the outermost mantle of the rocks constituting the earth crust rocks are subject to continuous physical chemical and biological weathering plants grow and decay on the soil covering the rocks. Soil is the major component of the lithosphere. The organic matter in soil is decomposed by microorganisms, thus forming biomass. This biomass is mixed with the soil fauna. The major component of soil are air, water, mineral, and inorganic matters obtained from the from weathering of the parent rock तो लिथोस्फियर रे हला कोन बाकी जहा रहिला एक तो गला एटमॉस्फियर द्वितीय रे गला हम जानिले हाइड्रोस्फियर थर्ड हला लिथोस्फियर लिथोस्फियर रे लैंड रे अवेलेबल थिबा समस्त टाइप रो रॉक एंड एक्सेट्रा को हम मिसई देले एटा हि जीवो लिथोस्फियर तो ई लिथोस्फियर रो स्कोर हमरो पृथ्वी रो कोर को जाई छे देखो एटी गोटे डायग्राम अछि लिथोस्फियर रो स्टार्टिंग केन देखाउछि हां तापर आउटर कोर केन देखाउछि इनर कोर केते किलोमीटर पाखबाकी 3200 किलोमीटर 5000 किलोमीटर गला परे हमको मेन कोर मिलिबो एटी विभिन्न प्रकार रो हमें एलिमेंट्स पाइबा तो the lithosphere has a thickness range of 64 to 96 km. The uppermost part is the lithosphere. The rich is silica, aluminium, and is therefore known as SiAl. Silica and aluminium layer. The zone next to the SiAl is rich with silica and magnesium. So, इमने हेले different components जो माने कि लिथोस्फियर रे अवेलेबल अछती बिलो लिथोस्फियर 24 किलोमीटर पर्यंत रही परिबो the direct interaction between the atmosphere hydrosphere and lithosphere for millions of years has made the earth stable for life and has formed the biosphere तो ई तीनिटा जिनस मिसिला परे जेकिना हमर लाइफ स्टेबल होला एंड दैट क्रिएट्स ए बायोस्फियर तो बायोस्फियर रे तीनिटा पार्ट्स अछि फर्स्ट हला एटमॉस्फियर पांचटा लेयर देन हला लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर देन हला लिथोस्फियर तो ई तीनटा स्फियर जे तोळे मिसी गले ताकू कहै गेला बायोस्फियर तो मिलियंस ईयर हबो ए तीनिटा कंपोनेंट मिसी किना गोटे बायोस्फियर क्रिएट करचंती एंड ए बायोस्फियर is life on earth occupies a thin skin extending more than a few kilometers below and above the surface. This is commonly known as the biosphere. Both the biosphere and environment influence each other a lot. The oxygen and carbon dioxide levels of the atmosphere depends entirely on the plant kingdom. All the different geochemical cycles are essential for the continuous circulations of continuity which is necessary for supporting life तो ये सब हम कोन करे ना लाइफ को सपोर्टिंग करे तो एटी गोटे डायग्राम देखि परिबो ये बायोस्फीयर भितरे तीनटा लेयर अछि एटमॉस्फियर
हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर इकोस्फीयर गोटे बनाई मझे तो ये तीन जन को मिसेकिना गोटे इकोलॉजिकल स्फीयर जो क्रिएट होची इकोस्फीयर ता ऊपर गोटे थिन लेयर अछि सो टोटली आमे कहि परिबा एटा होची गोटे बायोस्फीयर सो दिस मच फॉर दिस टॉपिक थैंक यू